the highly anticipated 5-day special session of Parliament convened by Prime Minister Modi commenced on 11 am on September 18th. This extended parliamentary session, known as the Amrit Kaal, will primarily focus on discussions regarding the developments and progression of India's parliamentary democracy. There is a lot of anticipation regarding the outcome of this special session of Parliament. Throughout this 5 days gathering, I will be taking you through some of the significant speeches delivered by members of both houses of Parliament. Hello and welcome, you're watching HW News English. I am Saurabh. Starting with the Lok Sabha, Prime Minister Modi commenced the session by paying homage to late former leaders such as Sardar Vallabhbhai Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Chandrashekhar, Lal Krishna Advani, to name some. He expressed his gratitude for their significant contributions and sacrifice in service to the country. सरदार वल्लभभाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, अडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम, जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए हैं और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए, वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। During his speech in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary expressed concerns about the potential aspiration to establish one-party dictatorship. He further highlighted the selective use of central agencies like the ED, CBI and Income Tax Department against the opposition leaders and ministers. आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ हम कर सकते हैं। सर, there are fears of an ambition to establish a one-party dictatorship. ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। This has led to the sidelining of the opposition's role in parliament, destabilization of opposition-led governments through tactics like the purchase of members of legislative assembly and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against opposition leaders and ministers. Furthermore, the devaluation of parliament and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced during the second term of this dispensation. In 2021, the parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative bills. The decline in the referral of bills to standing committee is also notable, dropping from 60 to 70% during the previous government to only 22%. आपके लिए अच्छा होगा, ये हमारे डेप्यूटी लीडर है, पूछिए ना, सर हो गया. The first term of this government, a mere 13% in the second term. Additionally, the opposition has been denied the right to raise issues and press for vote during the legislative process, further undermining parliamentary norms. Sir, same
is the status of Rajya Sabha. I don't know whether it will be allowed or not. Sir, India's transition. Sir, मान लीजिए, मान के चलिए, India's transition from one-party dominant system to multi-party system, and more recently to a nascent one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with Parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. Moving on to Rajya Sabha, Congress President Mallikarjun Kharge, while delivering his speech, requested Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar to reconsider the suspension of MPs Sanjay Singh and Raghav Chadha, emphasizing that today is a day of celebration. मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा। मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे, ये उम्मीद से मैं आया था। यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है। तो कम से कम ये आज खुशी का दिन है, वो हमारे संजय सिंह को और चड्ढा को कम से कम हाउस में लाए, नहीं तो दो मेंबर को बाहर, सर 2 मेंबर को बाहर रख के अगर पहला दिन इम्पोर्टेंट दिन स्पेशल सेशन रहने, हाँ अमृत काल नहीं, अमृत काल तो कहो, मेरे लिए विष काल तो कहो, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूँ, बाहर मेंबर्स को रख के नहीं होता, ठीक नहीं लगता, तो आप जरा कृपया ध्यान से आप करेंगे और बड़ा दिल दिखाइए, गुस्सा कम कर दीजिए, कार्रवाई अच्छा चल रही है। Dr. John Brittas pointed out that the Prime Minister's presence in Parliament is minimum, stating that it amounts to only 0.001%. He also expressed concerns and said that we have reached the bulldozer era of justice. Now, the opposition leader was speaking about the presence of the Prime Minister. I was trying to dissect that. You know what is the presence of the Prime Minister in Parliament? 0.001%. 0.001%. So that is the period in which he attended the Parliament sessions. Sir, the leader of the House was very vocal, but he missed many crucial names, including Jawaharlal Nehru. Intention. And I know that when Dharmendra Saab is speaking, he would deliberately fill those void and would bring in Jawaharlal Nehru, Ambedkar Saab. Sir, I am telling you, sir, the names which have been missed by Piyush Goyal ji, you will have to spell out when you are speaking. Dharmendra Saab. Sir, the exercise would be meaningful if you discuss about the dreams and goals of our architects of Constitution. Sir, I will just dwell on the preamble of it. Sir, it speaks about, say, what does it say? Liberty, equality and fraternity. Sir, if you take justice, you will notice that we have reached the bulldozer era. That is justice now. The justice that is being imparted is the bulldozer era. Sir, if it is economic justice. Professor Manoj Jha, speaking in the Rajya Sabha, remarked that criticism from people like him is never personal. He noted that such criticism often prompts accusation of suggesting one should go to Pakistan. And he questioned whether the country is transitioning from integrated nationalism to segregated nationalism. अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से, Have we moved from integrated nationalism to segregated nationalism? क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये इमारत
इसकी बुनियाद मेलजोल पे है। इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे, इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बू द्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाएं। That's all for today's Parliament session. For daily parliamentary updates, stay tuned with HW News English. Thank you for joining us.